हेलो एंड वेलकम टू दिस एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन। और आज के हमारे खास मेहमान हैं मिस्टर संजीव बिखचंदानी, फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन इन्फोएज। इंडियन इंटरनेट पायनियर मिस्टर बिखचंदानी स्टार्टेड ऑफ एज एन एंटरप्रेन्योर। साल 1995 यानी कि 1995 में इन्फोएज इनकॉर्पोरेट हुई और साल 2006 में स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट हुई। इन्फोएज की सक्सेस स्टोरी के बाद मिस्टर बिखचंदानी टर्न इनटू एन इन्वेस्टर, we all know that, and a mentor. And he is now a philanthropist too. 2020 में संजीव जी को पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। आइए जानते हैं संजीव जी की जुबानी ही उनकी सक्सेस स्टोरी। वेलकम टू द शो मिस्टर बिखचंदानी एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम सर। Thank you so much for inviting me. It's a delight to be here. Our pleasure sir. Sanjeev sir, you are one of the India's most successful and the finest entrepreneurs. और हमारे व्यूअर्स जो है जरूरी आपसे जानना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंसेस। आपने एक छोटे से स्टार्टअप से शुरू किया, उसके बाद एक छोटी टीम के साथ यू हैव टर्न्ड इट इनटू अ लार्ज बिग ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरीबॉडी नोज इन्फोएज स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है and has been an outperformer throughout. How difficult, how daunting and challenging your journey has been so far? देखिए, when we started out, हमने शुरुआत की थी, हमें मालूम नहीं था कि हम कहाँ पहुंचेंगे। हम तो डेली काम कर रहे थे, वीकली काम कर रहे थे। और अगर आप डेली वीकली काम करते हो तो इट्स नथिंग इज डॉन्टिंग, क्योंकि आप तो छोटी छोटी चीज करते हो एंड एक एक कदम बढ़ाते हो। और when you look back after a few years, आपको एहसास होता है कि हम काफी दूर आ गए हैं। तो इट इज नॉट डॉन्टिंग, हम केवल डेली काम करते हैं अभी वही। अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए संजीव सर। हाउ यू स्टार्टेड, हाउ डिड यू प्लान दैट टाइम, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट तो बहुत नई चीज थी और अब तो इंटरनेट आम हो गई है। देखिए, अक्टूबर 1996 में मैं गया था प्रगति मैदान में, एक एग्जीबिशन था कॉल्ड आईटी एशिया। मैंने पहले कभी इंटरनेट देखा नहीं था। वहां पे मैंने एक स्टॉल देखा, इसमें लिखा था www, छोटा सा स्टॉल था। एंड मैंने पूछा ये क्या है। तब उन्होंने मेरे को समझाया कि साहब ये इंटरनेट है और इससे आप अपने ऑफिस से घर बैठ के इंटरनेट पे लॉगिन करके मोडेम से आप हजारों कंप्यूटर पे जो इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। तो मुझे बहुत वो इंट्रिगिंग लगा। मुझे लगा कि इसमें कुछ पोटेंशियल है। तो मैंने और जान पहचान और मैंने और जानकारी मांगी। आई इन्वेस्टिगेट, आई प्रोब्ड, और फिर मैंने कहा कि मैं एक जॉब साइट चालू करूंगा। हम शुरू में तो हम केवल अखबारों से जॉब लेते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड जब हमने वो किया और ट्रैफिक आने लग गई, तब हमने चार्ज करना शुरू किया। तो पहले साल में तो केवल 2.5 लाख 2,35,000 की आमदनी हुई थी। लॉस था, बिजनेस घाटे में जा रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा लॉस नहीं था, हम खर्चे कम रखे हुए थे। अगले साल 2,35,000 से 18 लाख हो गया। इट जंप्ड अप 7x। तो तब मुझे एहसास हुआ कि ये बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और हमने बाकी सब कुछ जो काम थे हमारे बंद कर दिए और इसी पे फोकस किया। 3 साल चलाए इसी तरह। 2000 में हमने वेंचर कैपिटल रेज किया आईसीआईसीआई वेंचर से। तो उसके बाद कंपनी में वी वर एबल टू इन्वेस्ट मनी इन ग्रोथ एंड कंपनी ग्रो हुई और 2006 में लिस्ट हुई एनएसई बीएसई पे। तो 9 साल लग गए फ्रॉम द टाइम ऑफ स्टार्टिंग नौकरी टिल द पब्लिक मार्केट लिस्टिंग। तो अलोंग द वे लोग आते गए, कारोबार बढ़ता गया, टीम बढ़ती गई। हमने कुछ और वेबसाइट लॉन्च की, जैसे जीवन साथी हुआ, 99 एकर्स हुआ, फिर लिस्ट की कंपनी। एंड फिर हमने 2007 में इन्वेस्ट करना चालू किया दूसरे स्टार्टअप में। हमने जोमेटो में इन्वेस्ट किया, हमने पॉलिसी बाजार में इन्वेस्ट किया, कई और में इन्वेस्ट किया। तो अब तक हम लगभग 80 स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर चुके हैं। एंड ये जो है, कई इन्वेस्टमेंट कामयाब हो रही हैं, कई नहीं कामयाब हुई हैं, बट हमारा काम चलता रहा है। जी सर, अगर हम इंडिया में इंटरनेट इंडस्ट्री की बात करें तो ये माना जा रहा है कि 2030 तक ये इसकी वैल्यूएशन जो है $5 ट्रिलियन तक हो जाएगी। अगर ऐसे अनुमान लग रहे हैं तो उसका मतलब है हमारे यहाँ पे स्कोप तो बहुत है।
लेकिन इसे पूरा करने के लिए चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं. सो हाउ व्हाट्स योर व्यू ऑन द इंडियन इंटरनेट इंडस्ट्री? देखिए, पोटेंशियल तो बहुत बड़ा है. अभी थोड़े चैलेंजेस आ चुके हैं क्योंकि वैल्यूएशन डाउन गई है, थोड़ा कैपिटल में कमी आई है. वेंचर कैपिटल थोड़ा कम है इस साल पिछले सालों के मुताबिक, बट ये थोड़ा फेज है. आई थिंक 1 to 3 साल चलेगा, लेकिन फिर कैपिटल वापस आएगा. जो बढ़िया कंपनी है वो आगे चलती जाएंगी, कुछ कंपनियां बंद होगी, बट दैट इज द नेचर ऑफ इंडस्ट्री. ये होता है. और जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग का इकोसिस्टम है सर, वो भी बहुत चेंज हो रहा है एंड इट्स चेंजिंग रैपिडली. इसके बारे में आपका क्या मानना है कि ये आप कैसे पैन आउट होते देखते हैं आने वाले समय? देखिए, डिजिटल एडवर्टाइजिंग तो आई मीन जब आप गूगल को देखते हैं, फेसबुक को देखते हैं, सारी वेबसाइट्स देखते हैं जो जिनका काफी शेयर है, काफी हिस्सा है डिजिटल एडवर्टाइजिंग में, तो जो टेक्नोलॉजी वो लाए हैं पिछले 20 सालों में, आई थिंक बहुत कुछ चेंज हो चुका है. मेजरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी इन एडवर्टाइजिंग, जो पुराने मीडियम है, जैसे प्रिंट हो गया, आउटडोर हो गया, टेलीविजन भी हो गया, तो काफी शेयर लिया है डिजिटल एडवर्टाइजिंग ने. और डिजिटल एडवर्टाइजिंग कुछ फायदे भी है कि साहब इट इज मेजरेबल, इट इज अकाउंटेबल, इट इज डिविजिबल, and all that has proved to be beneficial for this industry. सर, जैसे कि आपने कहा कि आपने इन्वेस्टिंग की है बहुत सारे स्टार्टअप्स में, और जोमेटो, पॉलिसी बाजार जैसी कंपनीज, न्यू वेंचर्स में आपने इन्वेस्ट किया और जब लिस्ट भी हो गई है, कहीं आपको कभी ऐसे लगा कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैव गॉन रॉन्ग समटाइम्स? और आप इस शॉर्टलिस्ट कैसे करते हैं? आप चुनते कैसे हैं कंपनियां फॉर इन्वेस्टमेंट? देखिए, इन्वेस्टमेंट्स कीप गोइंग रॉन्ग एवरी नाउ एंड देन. ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप 10 में इन्वेस्ट करो, 10 कामयाब हो जाए. जी. आप अर्ली स्टेज पे कर रहे हो, अर्ली स्टेज में प्रेडिक्टेबिलिटी इज पुअर, यू कांट टेल कि कौन जाके बड़ी होगी, कौन जाके फेल होगी. जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको लगता है कि सब सक्सीड होंगी, कामयाब होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है लाइफ में, बिकॉज दीज आर वेरी अर्ली स्टेज कंपनीज. अर्ली स्टेज में रिस्क होता है. अर्ली स्टेज में प्रेडिक्टेबिलिटी इज पुअर, यू कांट टेल फॉर श्योर. एंड हमने कई गलतियां किए, बट देखिए, गलतियां तो some are, we should have anticipated, some were unpredictable, right? कुछ कभी हमने भी गलती की है, कभी अंतरों ने गलती की है, कभी एनवायरनमेंट ऐसा था, कभी बैड लक था, तो ये होता रहता है. दिस इज पार्ट ऑफ द गेम. इंडिया को लैंड ऑफ यूनिकॉर्न्स कहा जाता है, बिकॉज अगर पिछले 2 साल में देखें तो बहुत सारे यूनिकॉर्न्स ने जन्म लिया है हमारे इंडियन सॉइल पे. ये जो आप अब सिनेरियो देख रहे हैं, नाउ वी आर इन अनसर्टेन टाइम्स, वी ऑल नो दैट. एक तो जो सेंट्रल बैंकर्स कर रहे हैं, राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, राइजिंग इन्फ्लेशन, वॉर्स, अनरेस्ट, जियोपॉलिटिकल अनरेस्ट, देन यू हैव रिसेशन फेयर्स, यूरोजोन, यूएस. इसके चलते आपको लगता है कि जो स्टार्टअप्स की एक देयर वाज बहुत सारे स्टार्टअप्स आ गए थे, आपको लगता है कि इसमें कुछ धीमापन आएगा नए स्टार्टअप्स के आने में? और क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि फंड रेजिंग इज नॉट एज इजी नाउ बिकॉज ऑफ द करंट सर्कमस्टेंसेस जैसे पिछले कुछ सालों में रही. देखिए, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, ये साइकिल है. अब आप देखिए, इफ यू लुक एट अप्रैल जून 2020, जब लॉकडाउन था, पैंडेमिक नया नया आया था, जब हमें कोई जानकारी नहीं थी कि इसका वैक्सीन क्या होगी, क्योर क्या होगा, कब तक आएंगे वैक्सीन और क्योर, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है. We were all scared. We were locked up inside. Now, at that time, नौकरी -44% ग्रोथ हुआ in that quarter, YOY, year on year. ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस पहले आए नहीं है. अब आप 2009 को देखिए, 8 को देखिए, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, right? That was much worse than it is today. तो सन 2000 देखिए, जब .com मेल्टडाउन हुआ. So there have been bigger crises in the past. It is not as if this is the biggest crisis we faced. And उन सब क्राइसिस से हम निकल के आए हैं, इससे भी निकलेंगे. एंड हाँ, कुछ तो तकलीफ होगी. जो स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने अपना गलत मॉडल पे गए हैं, खर्चे ज्यादा है, आमदनी कम है, they will have to adjust or they will have to
merge with somebody else or they will have to shut down. But that's part of the market. Right, sir. आजकल हम ले ऑफ्स के बारे में बहुत सुन रहे हैं. आप आईटी सेक्टर ले, आप कोई भी सेक्टर उठा के ले ऑफ्स तो चल ही रहे हैं. मेजर ले ऑफ्स जो है वो आईटी सेक्टर में देखने को मिल रहे हैं. इसका कैसा इम्पैक्ट देते हैं आप इंडिया के जॉब मार्केट पे एंड ऑन योर कंपनी? देखिए, स्लो डाउन तो है हायरिंग में आईटी में, पर नॉन आईटी फिर भी ठीक कर रहा है. तो आई थिंक अगर 2-3 क्वार्टर के बाद अगर ग्रोथ पिकअप हो जाए, then things will come back to normal. कुछ स्टार्टअप्स जो है, if they are fundamentally unviable, there's a problem there, and that problem is permanent. But by and large, I think companies will tighten the belt a bit, but come out of it. सर, आजकल एक जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है स्टार्टअप्स में, वो ये है कि स्टार्टअप्स को 1 साल या 2 साल या 3 साल हो जाते हैं, देन दे प्रिपेयर फॉर लिस्टिंग. दे वांट टू गेट एन आईपीओ एंड लिस्ट द कंपनीज. इज दिस स्ट्रेटजी राइट स्ट्रेटजी? देखिए, पहले तो जो स्टार्टअप होते हैं वो लिस्ट, मोस्ट स्टार्टअप्स हैव नॉट बीन केपेबल ऑफ लिस्टिंग इन लेस देन 10 years. अगर आप देखें जी, टमाटो 2008 में चालू हुई, 2021 में लिस्ट हुई, 13 साल. पॉलिसी बाजार 2008 में चालू हुई, 2021 में लिस्ट हुई, 13 साल. आप हर एक स्टार्टअप को देखिए, कम से कम 8 साल 10 साल लगते हैं लिस्टिंग के लिए. तो ये 2-3 साल का खेल नहीं है, और जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 8-10 साल लगते हैं. हाँ, एक चीज है कि जो आज का माहौल है उसमें लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स को लिस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा. द मार्केट विल नॉट एक्सेप्ट इट. So I think it is important for companies to be profitable before they try to list in the next 2-3 years. Loss making company का problem होगा लिस्ट करने. जी, क्योंकि हम देख चुके हैं जो रीसेंट लिस्टिंग्स भी हुई है कुछ बड़े कंपनीज की, वो they have been investors have been disappointed by the stock performance and stocks have not been doing well. और profitability को लेके बहुत सवाल जो है वो स्टार्टअप्स के लिए उठाए जाते हैं. और आपने बिल्कुल सही कहा कि उन कंपनियों के लिए काफी दिक्कत होगी जो प्रॉफिटेबल नहीं है आने वाले समय में लिस्टिंग्स के लिए. सर, जो करंट सिनेरियो चलता है, इसे आप इंडिया के लिए कैसे देखते हैं? ये माना जाता है कि इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट as far as the growth is concerned. Global economies are not faring it well at all. How shining is India? India, compared to other countries, is doing rather well. But who comparison other countries have? If you compare it to our own past, we would like to do better. If you compare it to our targets, our requirements, our unemployment levels, or the amount of workforce coming to the labor market every year, we need to grow faster. And I think अगर 1-2 साल में ये दौर खत्म हो जाए, and we get back to faster growth, it'll be all right. सर, जब आपने बिजनेस शुरू की थी 1990s में और अब जो environment है, how different is it? I mean, we talk about ease of doing business. Is it really there? Yeah, I think the government is working hard to make business easier. Right? I think with the digital infrastructure, a lot of things have got easier. Right? I think with automation, even of let's say the MCA portal, right? You can float a company much faster. Right? So several things are becoming easier. Naturally, we need to keep on working at it. To keep on simplifying rules, to make sure that new rules don't have unintended consequences. And that's an ongoing conversation with the government. So, your view on disruptive technology like AI? अभी तो AI की बड़ी बात की जा रही है, बड़ी. What is the kind of impact that you see of this kind of a disruption on job market and economy? We are waiting and watching. We are observing keenly. I think our ChatGPT देखें. जी. Will it displace programs or will it just make them more productive? Those are questions which as yet have not been answered. We are waiting and watching. So will companies get into the cost-cutting mode, or will they using ChatGPT, or will they get into, hey, how do I grow faster mode using ChatGPT? Right. Okay, वो देखना है. जी, और आपको लगता है कि जो इंडियन आईटी कंपनीज है वो एआई के लिए बिल्कुल तैयार है? आर दे ग्रेजुएटिंग टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी? See, all these Indian IT companies are run by very smart people.
These are educated people. These are people who know engineering, they know management, they know business development, they know organization, and they will adapt faster than most other companies. And therefore, I think we have seen it before. They have adapted. They will adapt again. So coming back to InfoEdge, you have verticals like Naukri.com, you have Jeevansathi.com, 99 Acres, Education, Shiksha.com. Which of the verticals do you think कि आपको आगे growth में सबसे ज़्यादा participate करे? देखिए, Naukri is the main business. It is 70-80% of our turnover. Yeah. So a lot depends on what will happen in Naukri. And there we are finding that we have innovated well, we have continued to innovate, we have sold well, we have serviced our customers well. So I think we are okay over there. That's the main business. I think 99 Acres has got huge growth, large market for real estate. I think education, Shiksha is great. I think actually all four of our verticals can give us growth, but on sheer size, Naukri is the biggest, and therefore a lot will depend on how Naukri does. So if I'm right, you also co-founded Ashoka University, which is ranks among the top universities in India. Yes. How did you come up to this kind of an investment and, getting into this business? Investment nahi hai, ye philanthropy hai. This money will not come back. Ye donation hai. And it is collective philanthropy. So 100 se zyada donor hai, founder hai. And everybody has come together to do this. And we felt that, देखिए, इंडिया में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत सारे मैनेजमेंट स्कूल है, but good private liberal arts and sciences colleges उतने नहीं है. And we said that's a gap in the market. Let's come out with a new model and fill that gap. हमने वही किया. Any new companies on your list to for your investment purpose? वो हम देखते रहते हैं. We're not making any announcements right now, but we continuously evaluate companies and we invest. What are the simple criteria of looking for investing in a company, sir? Because अब जो आजकल के नए entrepreneurs हैं, they need guidance from people like you. हम पहले आइडिया देखते हैं कि क्या आइडिया परस्यू कर रहे हैं, and is it solving unsolved problem? क्या वो कस्टमर उस प्रोडक्ट या सर्विस को चाहेगा, खरीदेगा? अगर इसका आंसर yes है, we then look at the quality of the team. Okay. How are the founders? How committed? How passionate? How talented? How capable? How honest? Okay. उसके बाद हम बाकी सब चीजें देखते हैं. और ये पर ये देखते हैं. So what is the future of the Indian startups? आपने कहा कि 2-3 साल मुश्किल के हो सकते हैं. उसके बाद आप कैसा देखते हैं? How do you see them growing? देखिए, the Indian population is large. They are aspirational. Indian economy grow कर रही है. All of this will lead to decent growth for well-run companies and well-run startups. So I think, therefore, long run में Indian startups are good. Medium term में भी ठीक है. Short term में थोड़ा turbulence आएगा. सर, आपकी मेंटोरशिप के तो बहुत चर्चे हैं, सारे आपके सुनना चाहते हैं. अब जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? मैं 2-3 चीजें बोलता हूँ उनके लिए कि number 1 is dream big but start small. सपने बड़े होने चाहिए, but पहले कुछ कदम धीरे-धीरे लीजिए. So that way you will make fewer mistakes. When you make mistakes, they won't be expensive mistakes. You will learn from the mistakes and then learn how to achieve big. Okay? So dream big but start small. Second, मैं बोलता हूँ focus on the customer. अगर आप कस्टमर की unsatisfied need, unmet need को satisfy कर रहे हैं, meet कर रहे हैं, तो you will get customers to buy your product or service. And if customers buy your product or service, तो investor का पैसा आ जाएगा. Focus a lot on the customer. Okay. So there are the 2 points. Third point? Third point is it's all about people. Yes. Your team, your customers, your shareholders, your co-founders. So be very good with working with people. Be very good at creating trust across the tables. That's really important. So if in current circumstances where there's too much of uncertainty and India is standing out, resilient, what 3 key factors do you think
that has structurally gone right for India? I think the kind of digital public infrastructure we have been able to put in place, this government has done in the last 9 years, is truly remarkable, right? Aadhaar, UPI linking to Aadhaar, linking to PAN, mobile telephone penetration, data on the mobile, Jan Dhan accounts, DBT, right? All of this has been truly remarkable, and I'm not sure enough people fully comprehend the impact of this stuff, right? So our DBT program, the food grains the government gives free of cost, has actually, all of this has enabled economic inclusion. And it is probably the largest social security program in the world, but may not be recognized as such. Right? What this leads to is that when the economy grows, while it is true that the rich are getting richer, but it is also true that the poor, because of this digital public infrastructure, the government is able to pass on economic benefits and aid to the poor, and that's what allows for inclusive growth. True. So I think this has been a remarkable achievement of the last 8, 9, 10 years of this government. I think Startup India is a big thing that this government has done. अब आप देखिए, I passed out of college in 1984 and I joined industry. My first job was in advertising. Right? From 84 to 2023 has been 39 years. And I look back on the last 59 years and I see that the Indian business and economic landscape has changed dramatically. It's not been a revolution, but it's been an evolution. It has taken 39 years. Right? Right. And when I look back on it, a lot of the change, the buzz, the growth in employment, the investments have come from industries and companies and sectors that either did not exist or barely existed in 1984, 39 years ago. So IT did not exist. IT-enabled services did not exist. Internet did not exist. Private sector banks barely existed. Private sector insurance companies did not exist. Private sector airlines did not exist. PPP projects and infrastructure did not exist. Private sector power did not exist. Private sector power distribution did not exist. Sector after sector after sector did not exist. Now, this change has come about due to, talent, enterprise, technology, capital, but most importantly, government reform in rules and regulations. Right? And I think, and then the last 8 years, you've got this digital public infrastructure. But what it tells me is that many of these new companies and industrial sectors were startups. Infosys was a startup in 1984. Yes. It's still a startup. They are giant companies today. So the giant companies of tomorrow are startups of today. And this government recognizes the importance of startups. And therefore, Startup India becomes very important. I think this will be the foundation for big growth going forward. एक last सवाल, is enough being done to create jobs in our country? देखिए, this is a tough one because आबादी इतनी है, population इतनी है, population है. I think some stuff is being done. Some stuff needs to be more successful. But if you're able to create enough entrepreneurs, right, then your employment and job problem will get solved because entrepreneurs will employ people. Thank you so much, Sanjeev sir. आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए appreciate your time, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.